So students, we are on the last part of this topic, past indefinite tense, and we have done the positive sentence as well as the negative sentence, and we have gone through the formation as well as the formatting of these two parts of this past indefinite tense. Now we are on the last part of this tense, and that is formation of interrogative sentence. सवालिया जुमले हम लोग कैसे create कर सकते हैं past indefinite tense के. I want to repeat that past indefinite tense is used to reflect those events or action which happened somewhere in the past, जो कि past में कहीं ना कहीं हुए होते हैं. हम उन बातों को reflect करने के लिए past indefinite tense use करते हैं. So students, let's see the structure of the past indefinite tense as an interrogative sentence. Definitely students, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये है वो स्ट्रक्चर जिसके जरिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिड को स्टार्ट में लाना होगा, डिड के साथ आपने सब्जेक्ट ऐड करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन उसके साथ ऑब्जेक्ट. इसी के जरिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. तो स्टूडेंट ये देखें, अगर डिड सब्जेक्ट यू वॉच फर्स्ट फॉर्म एंड दैट मूवी इज ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग से हम लोगों ने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर लिया. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, डिड आई कॉल यू, डिड स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट आई, कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट. थर्ड सेंटेंस, डिड यू अप्लाई फॉर द न्यू जॉब, डिड स्टार्ट में, यू सब्जेक्ट, अप्लाई मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर द न्यू जॉब इट मीन्स यहाँ पे preposition फॉर एंड द न्यू जॉब इज आर्टिकल विद ऑब्जेक्ट. डिड ही ब्रिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, यहां पे भी डिड स्टार्ट में आया क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है. ही, इसके बाद सब्जेक्ट, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब his, and documents are the object in this sentence. So students, we are on the end of this topic, and you might understand that how to format past indefinite tense and its different, we can say, parts like positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. I just want to conclude this topic that you always use past indefinite tense to represent some event or some action which actually happened in the past. कोई चीज जो पास्ट में मुकम्मल हो चुकी होती है, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए पास्ट टेंस को यूज करते हैं. इसकी पॉजिटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब हम पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं. इसी तरह जब नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं. डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो इसके साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं आएगी. इसी तरह सेम जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर रहे होते हैं तो डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिया जाता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिएट की जाती है, तो तब आपके पास एक interrogative sentence आ जाता है past indefinite tense. So students, this was all from my side from chapter number 3, media and its impact, and we have discussed some important grammatical concept as well, such as the past indefinite tense and kinds of pronouns. I hope you understand this chapter well. This is Sardar Hamza, your English instructor from tutoria.pk. See you in the next video.